Good evening, everybody. So, today we are going to learn about the chapter in maths, which is volume and capacity. So, all of you must have heard about these two terms, volume and capacity. We keep using these two terms in our daily life. So, can anybody tell me where in their life have they used this word volume? Have you ever used the word volume? So, volume is something which is a very important part of our life because it tells us and it informs us about what amount of space a container or object is occupying. Okay, so in shops and in our homes as well, we usually talk about what is the volume this liquid is occupying. How much volume is this juice in the box occupying? How much volume is the milk in the container occupying? So all of these are the examples of the daily life things that we come across when we talk about volume. So as you have the screen in front of you and you can see the definition of volume, like volume is the amount of space a container or object occupies. Okay, that means volume is the amount of space a container or object occupies. That means if we talk about a liquid, let's say fresh orange juice in a glass jar, so we can easily judge that okay, the volume is above the half of the container, or we can see that the volume of the juice is less than half of the container. So all of this are the real life examples. So volume is the amount of space a container object occupies. Okay, and capacity, whereas, is the amount of water required to fill the fish tank, milliliters or liters. So it is the maximum volume, or basically amount of something, a liquid, which a container can accommodate. So capacity, like how much capacity this container has. So we usually come across such questions in our daily life. How much capacity can a juice container have? Like, is it 1 liter, is it 2 liters? So if we talk about a big Pepsi bottle which is of 2 liters, so we know the fact that the Pepsi bottle has a capacity of 2 liters. That means the maximum volume which, or the maximum space that a liquid inside it can be occupied by the container is known as the capacity. So capacity is the amount of water required to fill the fish tank, which goes like that. So we can talk about it in milliliters or liters. Okay, if we talk about the Pepsi bottle which has 2 liters of capacity, then we can also talk about its capacity in milliliters, because we can easily convert liters into milliliters. हमारे पास कुछ बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं लीटर्स टू मिलीलीटर्स जाने में एंड मिलीलीटर्स टू लीटर्स जाने में, बिकॉज आपके पास काफ़ी सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो मिलीलीटर्स में भी होते हैं, जो कम होते हैं, जिनकी कैपेसिटी कम होती है, यूजुअली हम उनको मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं. कई जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे पेप्सी की बॉटल या इवन मिल्क, जो हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं तो हम उसके लिए हम लीटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल इज वॉल्यूम इज द स्पेस द टैंक and water take up. Now if we come on to this example, so of course the definition starts with volume is the amount of space a container or object occupies, कि वो कितना भरा हुआ है. It's like that. So let's concentrate on this example. So it says capacity is the amount of water required to fill the fish tank. Now क्या किसी ने कभी फिश टैंक देखा है? क्या किसी के घर में फिश टैंक है?
किसी के घर में है क्या? मेरे घर तो नहीं है, तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, बट हाँ मैंने शॉप्स में ज़रूर देखा है कि वी हैव अ फिश टैंक जिसमें फ़िशेज़ होती हैं. जिन जिन के भी पास फ़िश टैंक है उनको पता होता है कि एक फ़िश टैंक में फ़िशेज़ होती हैं. इवन सम ऑफ द पीपल हैव द tortoise एज देयर पेट, एंड अलॉन्ग विद दैट फ़िशेज़ तो होती हैं, और उनके लिए रहने के लिए यू हैव आर्टिफिशियल grasses, and you have water of course, and you have their little house. So this is how the fish tank looks like. Okay, so the capacity is the amount of water required to fill the fish tank. कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये देखो, ये अगर इतना दिख रहा है आपको, दैट मीन्स ये इतना अकोमोडेट कर सकता है पानी. इसकी कैपेसिटी यहाँ तो नहीं हो सकती, राइट? इट कैनॉट अकोमोडेट वाटर टिल हियर बिकॉज कंटेनर ही इतना है ना बच्चों? सो इट कैनॉट अकोमोडेट वाटर विच गोज अप हियर. इट कैन ओनली अकोमोडेट वाटर टिल हियर. दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, जो कि इज़ ईजिली मेजरेबल. कैपेसिटी निकालने का भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला होता है. सो कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द फिश टैंक. अगेन कैपेसिटी है, दैट मीन्स कितना मैक्सिमम तक जा सकता है, तो वो मिलीलीटर्स या फिर लीटर्स में होती है. सो वॉल्यूम इज द स्पेस द टैंक एंड वाटर टेक अप. वॉल्यूम क्या होता है कि अब यहाँ पे हमें पानी दिख रहा है टिल हियर, वी कैन क्लियरली सी द वाटर टिल हियर. इट्स नॉट टचिंग द टॉप ऑफ द surface of the container, but it is a bit lower than the actual top of the container. That means जो वॉल्यूम होगा वो इतना तक ही होगा जो भी पानी ऑक्यूपाई कर रहा है. So volume is the space the tank and the water take up. So the most common unit of volume is centimeters cubed. ये it's just an extra information for you all that the most common unit of volume is centimeters cubed. So as the word itself says, it is centimeter and then cube. Okay, so centimeter cubed means ये आपका एक वॉल्यूम का एक मोस्ट कॉमन मेजरमेंट दी हुई है. So 1 centimeter cubed will hold 1 milliliter of fluid or another substance. Now they are clearly saying, first of all, can anybody tell me how do we write milliliter? Like for example, liters is written in L, capital L. How do we write milliliters? So as the word suggests, it is milli and then liter. So for milli we usually write M, and for liter it is L. So again milliliter can be written as ml, that is milliliter. Okay, so I have written it for you over here. So the most common unit of volume is centimeter cubed, and centimeter cubed is nothing but ml. 1 centimeter cube will hold 1 milliliter of fluid. So we can easily write that 1 centimeter, let me write it here, 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. Okay. Now 1000 centimeter cube will hold 1000 milliliters of fluid or another substance. अब यहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन शुरू होती है. हमें ये पता है, दिस वी नीड टू कीप इन माइंड दैट 1 centimeter cube is 1 milliliter. तो इफ़ वी टॉक अबाउट 1000 centimeter cube, तो क्या हम इसको 1000 milliliters लिख सकते हैं कि नहीं? हु इज़ गोइंग टू टेल मी दैट हाउ डिड दिस कैलकुलेशन टेक प्लेस?
तो आप सब सोचिए एंड देन you have to think about that if 1 centimeter cube is 1 milliliter, तो दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ मिलीलीटर. हमने अभी यही पढ़ा कि सेंटीमीटर क्यूब विल होल्ड अ मिलीलीटर ऑफ फ्लूइड. दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मिलीलीटर. तो अगर हम यहाँ पे 1000 नंबर, बस नंबर चेंज कर दें, 1000 लिख दें, तो ऑफ कोर्स यहाँ का भी 1000 चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों यूनिट्स आपके सेम हैं, तो चाहे अगर हम यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब्स लिखें या यहाँ पे 500 यहाँ पे भी लिखें, सब सेम रहेगा क्योंकि यूनिट सेम है. तो 1000 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी 1000 लिखना पड़ेगा, विच टेल्स अस दैट इफ यू नोटिस इट हियर दैट 1000 मिलीलीटर्स इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो इन्होंने आपको ऑलरेडी ये इक्वेशन दे दी है, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला दे दिया है, जो हमें आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. और हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा वॉल्यूम ही इन चीज़ों में मेजर होता है. आइदर you guys will see milliliters, which most of us usually see in our daily life, but a milliliter is actually a centimeter cube. Okay, so we need to remember this thing for always. इस बेसिस पे हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे. Now we need to remember that 1000 milliliters is 1 liter. Now who amongst you know this thing that 1000 ml is 1 liter? So this is another conversion which we need to keep in mind, that 1 liter, if we talk about liter is the larger unit. As I've told you कि अगर हमें बड़े बड़े वॉल्यूम की मेजरमेंट करनी हो तो लीटर ही काम आता है. तो 1 लीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन है, वो यही है कि 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स. ओके, so 1 liter is 1000 milliliters, but 1000 milliliters is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमने यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर, अब आपसे कोई पूछे कि लीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, यू आर जस्ट सिंपली गोइंग टू से दैट 1000 लीटर्स इज 1000 मिलीलीटर्स एंड मिलीलीटर्स इज सेम एज सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हमारे पास सारे रिलेशंस आ गए हैं बिटवीन लीटर्स, between milliliters, so ml, and between centimeter cube. There we go. All right, so हमें ये ध्यान रखना है along with this, ये भी बहुत important है, इससे आपका हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा. so हमने यही देखा कि वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं मिलीलीटर्स और लीटर्स में. और वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, जो एक थिंग जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होती है स्पेस, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं. कैपेसिटी होती है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द फिश टैंक, कि अगर आपको उसको पूरा फिल करना हो, उसको पूरा ही फिल करना हो, तो उसके लिए आपको कितना पानी लगेगा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी. कि भैया इसके ये मिल्क कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है, आप कितना मैक्सिमम मिल्क उसमें फिल कर सकते हो. Now the thing is that there's a question out here that do you see how capacity and volume are similar? The number stays the same but the units change. आपके पास नंबर सेम रहेगा, बस यूनिट चेंज हो जाते हैं. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे. तो अभी के लिए हमारे पास whatever we have is these two terms, which is volume and then we have capacity. Both of them can be measured in milliliters or liters. Okay, and the most common unit of volume is centimeter cube, because हम ये बोलते हैं because milliliters इसी के equal होते हैं, तो हम milliliters बोले या centimeter cube बोले, it's one and the same thing. Now let's move ahead.
अब हमें कैपेसिटी को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है. सो वी हैव दीज 3 पिक्चर्स हियर. The definition of capacity is as follows. The oil, juice, drink, and gasoline containers are just a few examples of the objects that illustrate capacity. अब देखो, क्या एक पेज, अगर हम if we talk about a page, can it have capacity? You can, everybody, you can take out your notebooks, you can open up a page, you can touch that page, a single page, and then can you describe me its capacity? Would you be able to talk about its capacity? Does it have capacity? Because capacity, as we have just read, is the amount of water which is required to fill the tank, or it's the maximum volume it can accommodate. तो क्या पेज पे हम कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर या कोई जूस रख सकते हैं? नो. द पेज विल अब्जॉर्व दैट और पानी सारा गिर जाएगा. तो एक कैपेसिटी हम क्लोज्ड 3D फिगर की ही हम बात कर सकते हैं. सो एक क्लोज्ड फिगर कैन बी दिस, कैन बी दिस, कैन बी दिस. और मैं इन तीनों का नाम भी दे सकती हूँ. दिस लुक्स लाइक अ सिलेंडर, दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, एंड ये भी सॉर्ट ऑफ अ क्यूबॉइड है विद द स्टिक अलॉन्ग विद इट. तो ये सारे क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, ये सारे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स. इनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है, जस्ट लाइक द पेज हैज़, बट इट ऑल्सो हैज़ हाइट. ओके, सो दिस इज अ सिलेंडर विद रेडियस, विद हाइट, and with diameter. This is a cuboid with length, breadth and height. Again, this is somewhat like a cuboid with length, breadth and height. तो इसके अंदर ये है ऑयल, ये ऑयल का टैंक है. इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी कुछ होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑयल अपने में भर सकता है. कैन इट होल्ड ऑयल दैट इज लेवलिंग अप टिल हियर? नो, because the container is ending here only, so it can just accommodate oil till its highest point. The next example could be the juice drink. Now this is a box. Every one of you have tasted juice drink and it tastes really well. So either this is the example of a juice drink. ये juice का box होता है. आप सबने पिया है real juice? I have drunk it many times in my life. और इट इज़ रियली नाइस. तो जूस ड्रिंक में हमें दिखता है कि जब हम उसको ओपन करते हैं उसका लेवल फिल्ड होता है, इट टचेस द टॉप, बट एज वी कीप ड्रिंकिंग इट, इट गोज डाउन डाउन एंड डाउन. दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट इट्स कैपेसिटी, दैट इज द मैक्सिमम थिंग द जूस इज ऑक्यूपाइंग. द मैक्सिमम कैपेसिटी, इट्स द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. ओके, एंड देन एज वी कीप ड्रिंकिंग द जूस, उसका वॉल्यूम कम होता रहता है, जूस का वॉल्यूम. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द 2 टर्म्स विद द सेम एग्जाम्पल. ओके, तो इसमें जूस पड़ा होता है, दैट मीन्स इसकी हम कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं. ये है आपका गैसोलीन. ओके, नाउ इसमें गैस ऑक्यूपाइड होती है. इफ सी, गैसोलीन इज व्हाट, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड गैस. दैट मीन्स इट इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड्स गैस. द gases can also be held, not just the liquid thing. Gases can also occupy space. Your fire extinguishers, your cylinders, all of these are filled with gases. Okay, तो उसका भी, गैस का भी वॉल्यूम होता है जो वो गैस ऑक्यूपाई करती है. बट गैस जो है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी कि वो जितना भी कैपेसिटी है वो सब उस चीज़ को यूज़ कर लेती है, खुद ही फैल के उतना वॉल्यूम अपना बना देती है. क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास 1 लीटर का टैंक है, बट आपने उसमें जस्ट 500 मिलीलीटर्स तक की ही गैस कन्फाइन करी हुई है? नो, बिकॉज एज सून एज यू पुट द गैस इनसाइड द 1 लीटर कंटेनर, इट विल गेट स्प्रेड एंड इट विल मेक इट्स वॉल्यूम 1 लीटर itself, because gas is something that occupies the space fully. But it can be stored, and that is why we have talked about the gasoline's capacity. हम इसकी भी कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं. नाउ लेट मी टॉक अबाउट
let's say a pencil. Can a pencil hold water? Can we talk about its capacity? That's a question for you all. So, can pencil hold water? Can we talk about its capacity? Now, this is going to be the homework for you. What you can do is you can try taking a pencil and you can put some water and let's see if we can store water inside it or not. So बच्चों हम let us do one activity. Take out your pencils and put few drops of water on it. You can use your water bottle and then you can see if you are able to store water inside it or not, and if you can talk about the capacity and if you can give me its capacity in numbers. I'm sure this is going to be hard. It's next to impossible to do it because it's not a container. We cannot talk about its capacity at all. Okay, so the containers which have which are 3D in shape can definitely have capacity and volume. Now let's move ahead. Now this is one interesting chart जो हमें conversions और clear कर रहा है. Okay, so now let us read everything and let's take 2 minutes to closely look at these conversions. Conversion 1, conversion 2, conversion 3, 4, 5, there we go, 6 and 7. So let us first read and try to understand these conversions and then let us discuss. So let us take a minute and read it properly. So by now I think you all must have read the conversions. So let us talk about the first conversion, which is kiloliters and 1000 liters. Now do you know the fact that if we talk about the word kilo, KILO, okay, that means we have something in relation with 1000. So if we talk about 1 kiloliter, that is equals to 1000 liters. अभी तक हमने पढ़ा कि 1 liters equals to 1000 milliliters. That means if we start from milliliters, तो ये सबसे छोटा है. अगर हम 1000 milliliters लेते हैं, then हम 1 liter पे पहुँचेंगे. That means liter milliliter से बड़ा है. अगर हम ऐसे ही 1000 liters लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 kiloliter, KL, which is written here. Can you all see it here? So this is again, now we are going towards the higher side.
हमें ये कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। और ये मिलीलीटर किसके इक्वल था? वुड एनीबडी टेल मी? So this was equal to a centimeter cube. You cannot write centimeter. It is always a centimeter cube, that is equals to milliliter. If you take 1000 milliliters, you're going to go to liters. If you take 1000 liters, you're going to go to kiloliter. Okay, that means 1 kiloliter is 1000 liters. Now this is done. Let's move on to the next one. Hectoliter. Hectoliter is a new term to all of us. This is for your extra information only, that a hectoliter, that means 1 hectoliter is equals to 100 grams. 100 grams. But if we'll come on to this later, can anybody tell me that 1000 grams are equal to what unit? This is really easy. We've been doing this since our birth time. 1000 grams is equals to what unit? Think about it and tell me. I'm going to write it here for you. That's going to be 1000 grams. Okay, now before answering this, I would ask you one easy questions. क्या कोई कभी vegetables buy करने गया है अपनी mothers के साथ या अपनी grandmothers के साथ to the market, to the vegetable market? वहाँ हम क्या सुनते हैं कि आलू 1 किलो है, प्याज 2 किलो चाहिए, टमाटर 3 किलो चाहिए. Kilo means kilograms. Okay? तो दैट मीन्स अगर हम बोले 1 किलोग्राम चाहिए, दैट मीन्स 1 किलो चाहिए, ये शॉर्ट फॉर्म है. 1 किलो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू 1000, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट 1000 grams. So 1 kilogram is nothing but 1000 grams. Kilogram is written as kg. Just like kiloliters, it is written as kl. तो किलोग्राम लिखा जाएगा kg से, and 1 kilogram is 1000 grams. Just like 1 kiloliter is 1000 liter. So LL and GG. Okay. So now 1000 grams तो हमारे पास 1 किलोग्राम है, बट 100 grams के लिए क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास ये यूनिट आ जाता है जो कि हम इतने कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, बट दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट 100 grams is equals to 1 hectoliter. Hec means something related to 100. Kilo means something related to 1000. So hecto means something related to 100. That means 100 grams is equals to 1 hectoliter. And hectoliter is represented as HL. So this unit is also done. Now, क्या कोई मैच देखता है या कभी किसी ने कोई डायलॉग सुने हैं कि मुझे 1 डिकेड हो गया है ये काम करे हुए, इट्स बीन 1 डिकेड आई डन दिस थिंग एंड समथिंग लाइक दैट? तो this, if we talk about decaliter, it has something to do with tens. So आपको ये सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे बिकॉज इन सब का मीनिंग छुपा हुआ है. किलो इज़ विथ 1000, हेक्टो इज़ विथ 100, डेका इज़ विथ 10. तो हमारे पास अभी 100 ग्राम्स के लिए भी एक यूनिट है, बट व्हाट अबाउट 10 ग्राम्स? सो इफ़ वी हैव गॉट 10 ग्राम्स, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट 1 डेकालीटर, जिसको हम DAL से रिप्रेजेंट करते हैं. D and A हैज़ टू बी स्मॉल, L हैज़ टू बी लार्ज. पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, L हमेशा लार्ज होता है. So 10 grams is
1 decaliter. Deca means something with 10. Hecto means something with 100. So ये भी हमें याद करना है. Okay? So now let us first reread all these 4 things and let us put that in our notebooks. Also हमें पता है कि अगर हम 1 किलोलीटर की बात करें वो होता है 1000 लीटर्स. अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें वो होता है 1000 ग्राम्स. तो लेट मी राइट इट हियर. यहाँ से एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल रहा है. लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर. तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी. किलोग्राम किलोलीटर, 1 1000 ग्राम्स लीटर. क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज 1 लीटर? कैन वी से दैट? बिकॉज if 1000 grams is 1 kilograms and 1000 liters is 1 kiloliters, can we say 1 gram is 1 liter? बस यूनिट सेम है बट मतलब एक ही निकलता है. So both of them are almost equal. So 1 gram is 1 liter. If we put 1000 grams here, that will be equal to 1000 liters. Liters is basically for liquids and gas, and these are for solids. Okay. Now the new term is deciliter. It is very different from decaliter, which is DAL, and deciliter here is DL. सो डेसीलीटर क्या होता है? हम इसको ग्राम्स में कैसे लिख पाएंगे? So deciliter is 1/10 of gram. That is 1/10 grams. Okay? मतलब अगर हम 1 को भी 10 टाइम्स छोटा कर दें तो 1 ग्राम को भी अगर हम 10 टाइम्स छोटा कर दें, that means it is going to be equal to a deciliter. So 1/10 of a gram is a deciliter. Coming on to the next one, what is centiliter? CL is 1/100th of grams. अब देखो हम सबको उल्टा कर रहे हैं. अगर 100 ग्राम्स था तो हम उसको 1/100 ग्राम्स कर रहे हैं. दैट मीन्स 100 मतलब छोटा कर रहे हैं हम उसको. ठीक है. एंड अगर 10 ग्राम्स था तो हम उसका 1/10 कर रहे हैं. तो यहाँ से डेसीलीटर निकलता है, सेंटीलीटर निकलता है, मिलीलीटर निकलता है. Okay, so if we talk about milliliters, which is denoted by ml, ये होता है 1000th. I am not saying 1000, I am saying 1000th. That means 1/1000 grams.
इज़ अ मिलीलीटर। तो ये चार्ट आपको घर पे जाके होमवर्क करना है, दैट यू नीड टू revise it and learn it, and then we will have a random question session where I'll ask you just random things, that can you give me the what is the answer for what is 1 centiliter, what is 1 decaliter, and how much is 100 grams equals to. So you need to learn this by heart. Now this chart is going to be very useful in answering few questions which are going to come ahead. So let's move ahead. There are 3 questions. So we are not going to focus on the answer. The answer are hidden to us, let us suppose, and we are first going to solve it. The first question is, how many milliliters does 10 liters represent? Who is going to give me the answer for this one? These questions are dealing with milliliters and liters. This is the first thing we did. So who is going to first find the relation between these two terms? So as we did before, that 1 liter is 1000 milliliters. So let me write it. Just a second. मैं text box के through लिख लेती हूँ, so that it becomes very easy. There we go, which is 1000 ml. So हमें पता है कि 1 liter is 1000 milliliters. So if we talk about 10 liters, मतलब अब 1 को हटा के हम लिख रहे हैं 10. That means हम 1 liter को 10 times बड़ा कर रहे हैं. So 10 liters is going to be 1000 times 10. Now who is going to explain me this conversion? How does this answer A? And can anybody give me the answer for 1000 times 10? There. So as we have done in our classes, that if we're making 1000 10 times larger, we're just going to add a 0 next to it. So it is going to become 10,000. That means 10,000 milliliters, because हम convert कर रहे हैं liters को milliliters में by multiplying it with 1000. तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 10,000 milliliters. और ये हमने कैसे करा? With the help of this basic conversion. This is the major conversion जो हमें याद रखनी है for all these questions. So अब अगर हमें लीटर से छोटे उसमें जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे
उस टर्म को बाय 1000, और अगर हमें मिलीलीटर से लीटर्स में जाना है तो हम ऑलवेज डिवाइड करते हैं बाय 1000. ओके, सो हम डिवाइड करते हैं बाय 1000. ना हमारे पास 10 लीटर्स है, दैट मीन्स अब 1 के बजाय हो गया 10. हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 मिलीलीटर्स. तो अगर अब हम इसको हटाते हैं, ओके, अगर अब हम इसको रिमूव करते हैं, सी the answer is 10,000 milliliters. Now let us read the second one. How many liters does 4,000 milliliters represent? Now we have this side as 4,000. We need to guess this side. Who is going to do this, and can you please explain me the steps? So now we have, instead of, see, we know the fact that 1000 milliliters is 1 liter. ठीक है, और हमने देखा है जब हमें मिलीलीटर से लीटर्स में जाना हो, दैट मीन्स हमारे पास मिलीलीटर्स तो दिए और हमें लीटर्स गेस करने हो, हम डिवाइड करते हैं 1000 से उस गिवन वैल्यू को. तो हमें 4000 को 1000 से डिवाइड करना है. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. फॉर डिविजन आई एम यूजिंग दिस सिंबल, divided by 1000. Can anybody answer me this? क्योंकि जब हमें उल्टा जाना हो हम उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1000 से. वी नीड टू यूज दिस फैक्ट. सो हमने 4000 को 1000 से डिवाइड कर दिया है, एंड व्हेन यू कैलकुलेट द आंसर आपको मिलेगा 4. एंड इस टाइम यूनिट क्या होगी? यस, सिंस हमें आंसर ही लीटर में चाहिए तो हमारी यूनिट हो जाएगी लीटर्स. सो 4000 मिलीलीटर्स रिप्रेजेंट्स 4 लीटर्स. आपको बस यही देखना है कि आपको लीटर्स टू मिलीलीटर्स जाना है या फिर मिलीलीटर्स टू लीटर्स जाना है. अगर उल्टा जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर सीधा जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 liters. एंड नाउ इफ वी रिमूव द सर्कल, see the answer which we get is 4 liters. The third one will be the homework for you all. तो क्या आप ये घर से करके लाएंगे? अगेन हमें लीटर्स से मिलीलीटर्स में जाना है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को 1000 से. And with this hint, I am leaving this question for you to do in your homework. So that's it for today. We're going to continue in the next session. So have a good day.